Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Please confirm quickly if you are able to listen me, if you are able to see the screen clearly, right? I think there was some technical glitch, but I hope now everything must be fine, right? So basically in this live, we will discuss all the quants questions and the DM questions for the Z 2025, right? And quants में and DM में I hope आपने क्रैको पे आंसर की डाल के अपना चेक कर लिया होगा, right? When it comes to the quants, I think क्रैको is almost correct, right? Except two questions, I think every question is correct in the quants for the क्रैको part, right? But DM में there are a lot of vague answers and I would say कि take it with a pinch of salt or completely ignore the solutions of the DM and the VRC by the क्रैको because every year I see a lot of candidates जहाँ पे एक बच्चा let's say क्रैको में 13 स्कोर कर रहा है और उसका एक्चुअल स्कोर 3-4 आ रहा है और एक बच्चा ऐसा भी होता है जिस जो क्रैको के अकॉर्डिंग 5 स्कोर कर रहा है बट एक्चुअल में उसका 12 और 13 स्कोर आ रहा है राइट सो दीज क्रैको आंसर्स आई मीन वी कांट रिलाई ऑन दैट बिकॉज जेट में हर साल यही होता है ना कि वहां पे काफी एम्बिग्यूटी होती है तो यू कांट से विद एनी एश्योरेंस कि यार यही आंसर होगा या ये नहीं होगा एंड सेम गोज विद वीआरसी ऑल्सो वीआरसी में भी लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि यार क्या करेक्ट आंसर होने वाला है क्या नहीं होने वाला राइट सो द बेस्ट पार्ट इज टू रिलाई ऑन द ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी थर्सडे या फिर मैक्स बाय फ्राइडे यहां तक आपको अपने ऑफिशियल आंसर्स पता लग जाएंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट राइट यू कैन कैलकुलेट कि आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या बन रहा है एंड द ऑफिशियल आंसर की जनरली डज नॉट चेंज राइट क्वांट्स में अगर कुछ मिस्टेक हुई तो वो चेंज होगा नहीं तो वीआरसी डीएलआर में अगर आपको कुछ भी लग रहा है राइट इवन इफ यू फाइल अ लॉट ऑफ क्रिब्स नथिंग विल चेंज तो डीएम में और वीआरसी का तो स्कोर आपको 100% पता लग जाएगा सेम क्वांट्स का भी पता लग जाएगा राइट एंड जीके का तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा राइट so let's start with the first section that is the quant section right and please be active on the chat मुझे आप बताते रहना right कि what you have marked for this and also you can calculate your score meanwhile right अपना score भी calculate कर सकते हो right is everyone able to listen me please confirm guys please confirm if you are able to listen me clearly चलो start करें quickly all right please like the video guys before starting let's target 15-20 likes right so let's start with the quant section first and this is the answer key of one of my students right तो जो इसने आंसर चूज किए that doesn't mean कि this will be correct so I will be telling you the correct answer right so this was the first question I think इसमें this is a typical cat question कुछ नहीं करना था you have to assume that the first weight is this है ना या लेंथ एज्यूम कर सकते हो 13 एंड देन यू कैन ब्रेक इट इनटू 4 and 9 द करेक्ट आंसर फॉर दिस मस्ट बी सी राइट 42.6% मस्ट बी द करेक्ट आंसर राइट everyone agree I think 42.6% loss is the correct answer for this question right now let's move to the next question that is the ABCD is a rectangle where the coordinates of C and D are this so इसमें भी कुछ आपको ज्यादा करना नहीं था है ना बेसिकली आपको एक फिगर ड्रॉ करना था यू हैव टू लोकेट दैट -2,0 इज हियर एंड 2,0 इज हियर तो आपको पता लग जाता है ये एक लाइन आ रही थी एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 6 राइट y इज इक्वल टू 6 मस्ट बी द करेक्ट आंसर एंड काफी लोग बोल रहे थे कि y इज इक्वल टू -6 भी हो सकता है यस y इज इक्वल टू -6 इज ऑल्सो पॉसिबल बट दैट वाज नॉट देयर इन द ऑप्शन राइट सो हम ये नहीं बोल सकते नन ऑफ द अदर ऑप्शंस इज करेक्ट सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी मस्ट बी द राइट आंसर राइट एवरीवन प्लीज कंफर्म ठीक है फिर कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन राइट इसमें कुछ भी नहीं करना था आई थिंक 1/6 प्लस 1/3 दैट इज हाफ ऑफ द पेमेंट्स 1/6 प्लस 1/3
इज हाफ ऑफ द पेमेंट्स, और बाकी हाफ आपको पे करनी थी एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 1,20,000. The correct answer for this question must be 1,20,000. Did everyone do this? सभी ने किया था ये वाला? आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन काफी इजी थे, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्वेश्चन ही डुएबल थे, राइट? कैट लेवल कह सकता हूं मैं इनको. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. राइट, सो फोर्थ पार्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि 72 होगा, 77 होगा, या 87 भी आ रहा है कईयों का. राइट, 82 भी आ रहा है काफी लोगों का, बट द करेक्ट आंसर इज ए. दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 77,500. 77,500 इज द करेक्ट आंसर. और ये कैसे आ रहा था? इफ यू टेक द सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम एज जीरो, राइट, यू विल गेट 77,500 एज योर करेक्ट आंसर. समझ आया? देन ये भी क्वेश्चन काफी डुएबल था. दिस वाज आल्सो द डुएबल. इसमें कुछ नहीं करना था. 4a इज इक्वल टू 2 पाई आर यू कैन डू, राइट? एंड a की वैल्यू को इफ यू अज्यूम द 1, सो यू कैन डू 4 इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो r वाज 2 बाय पाई. सो जो एरिया आ जाएगा वो a स्क्वायर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 बाय पाई आर स्क्वायर. 4 बाय पाई, सो पाई से पाई कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज पाई बाय 4. Pi by 4 should be the final answer in this case, right? So D must be the correct answer. Pi by 4 must be the final answer, right? सभी का correct है ये? Guys, please like the video. Let's target 40 likes. Please like the live. फिर देखो ये वाला क्वेश्चन था डस्टबिन्स वाला. I have little doubt over this question. A lot of people are getting 250 and a lot of people are also getting 260 as the answer. बिकॉज इसमें क्या आ रहा था, इसमें एक रेंज आ रही थी आपकी, है ना? इफ यू हैव ऑब्जर्व कि एक रेंज आ रही थी कि उस रेंज में आंसर आना चाहिए. सो आई थिंक आई गोट 250, बट मे बी 260 माइट बी द करेक्ट आंसर, राइट? आई थिंक 260 वाज गिवन बाय द क्रैकू आल्सो, राइट? व्हाट डिड यू गाइस मार्क? अगेन दिस वाज नॉट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टीएसडी, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल ही क्वेश्चन था. But I think a lot of people did some mistake while attempting this question, including me, right? So what was the answer that you guys marked for this question? 250 or 260? Quickly. Also, I would request you to open your response sheet so that you can also match your answers. Because DM में आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, किस रीजनिंग से आंसर आ रहा है उनका, राइट? सो डू दैट. सो आई थिंक 260 मस्ट बी द आंसर. 250 भी बोला है, 250 भी बोला है लोगों ने, 260 भी हो सकता है. सो दिस इज लिटिल डाउटफुल. मे बी 250 माइट बी द आंसर और 260 माइट बी द आंसर, बट जितना मुझे याद है ना? जितना मुझे याद है, तो आई थिंक आई डिड 250, राइट, फॉर माई अटेम्प्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, राइट? सेवंथ क्वेश्चन वाज अगेन ऑन द डुएबल पार्ट, राइट? तो सेवंथ का आंसर वाज the distance between the y-intercepts of the two lines is 6. So this must be the correct answer for the 7. Please confirm if this is the correct answer for the 7 part, right? Then coming on to the eighth question. Eighth question was purely based on your understanding of frustrum and hemisphere and their lateral surface area, right? है ना? तो यहाँ पे आपका 4,73,000 इज द करेक्ट आंसर, right? This was the question.
इन विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, है ना। देखो पहले तो सेम इंटीजर नहीं ले सकते थे बिकॉज एनी अदर इंटीजर बोला था, और काफी लोगों ने 12 मार्क किया, दैट इज द रॉन्ग आंसर, राइट। द करेक्ट आंसर इज द 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 4 इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक, आई अंडरस्टैंड योर डाउट कि अगर जीरो ले लिया, ये ले लिया, राइट, बट द पॉइंट इज जीरो नहीं ले सकते हम, है ना, जीरो नहीं ले सकते बिकॉज सेम इंटीजर नहीं लेंगे। लेट से फॉर एग्जांपल आपने 5 लिया, 5 के साथ 5 यू कांट टेक, तब HCF 5 आ जाएगा, बट यहाँ पे बोला एनी अदर इंटीजर, मतलब अपार्ट फ्रॉम 5 यू हैव टू टेक सम अदर इंटीजर, सो आंसर मस्ट बी 4। ठीक है। 10th question, I think 10th question was based on the simple geometry, sorry, simple trigonometry, right? Simple trigonometry. So 7 minus root 3 must be the correct answer. 7 minus root 3 must be the correct answer for this. सभी का 7 minus root 3 आया, right? 11th में again, 11th में I think A minus B and C are divisible by 3. This is the necessary and this is the sufficient condition, right? This is the necessary and this is the sufficient condition, right? Guys, please like the live. Please like the live. Let's target 50 likes at least, right? Please like the video, right? फिर यहाँ पे देखो यार, दिस इज द मोस्ट आई वुड से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, राइट। लोगों ने मुझे भी काफी गालियां दी है कि आप इसको अपोज क्यों कर रहे हो। माय फर्स्ट पार्ट इज दैट वी डू नॉट नो द आंसर, राइट। जो लोगों को लग रहा है कि उनका सेकंड, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट किया है, काफी लोगों ने 2 अटेम्प्ट किया है, काफी लोगों ने डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए अटेम्प्ट किया है, राइट। 2 माइट बी द करेक्ट आंसर, 2 माइट बी द रॉन्ग आंसर, नो बडी नोज अबाउट दैट। तो अभी आप ये मत सोचो कि यार आपका सेकंड अगर आपने मार्क किया है तो वो करेक्ट ही होगा, राइट। इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो यार, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग कि ये अंडरस्टूड होता है कि लोग अगर दिया हो तो बेस 1 नहीं होगा। दिस इज नॉट अंडरस्टूड, राइट। ए अगर कोई वेरिएबल है तो ए कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। वो आपको कंडीशन एज ए स्टूडेंट उसमें डालनी पड़ती है, इसीलिए उसने ए ग्रेटर देन 0 है, बट आई थिंक एग्जामिनर ए नॉट इक्वल टू 1 देना कहीं ना कहीं भूल गया है ना। ए नॉट इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं देना भूल गया है, राइट। सो आई थिंक वो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी है। वैसे तो अगर क्वेश्चन सही बनता देन 2 वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, एंड अभी भी वो 2 आंसर दे सकते हैं, बट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो सेड कि इस इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू अगर ये कंडीशन के साथ है देन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बट अगर ए की सिर्फ ये कंडीशंस को मैं कंसीडर करूं, दैट इज ए ग्रेटर देन 0, तब इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना। अगर मैं ए को इक्वल्स टू 1 लूं तो इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 5/x है तो x कभी भी 0 नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अंडरस्टूड, वी हैव टू टेक दिस कंडीशन कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट ऑल, राइट। तो वो अंडरस्टूड नहीं होता, वो हमें कंडीशन डालनी होती है। सो आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन सेटर की तरफ से मिस्टेक है, राइट। आई थिंक द क्वेश्चन शुड गेट डिस्कार्डेड, एंड आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, राइट। अगर सबको सेम मार्क्स मिले हैं तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, बट द पॉइंट इज कि सेकंड करेक्ट आंसर है ये हमें अभी तक नहीं पता। वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की फॉर दिस, बट हाँ, फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव अगर टाइम भी दिया, आपने सही डायरेक्शन में सोचा है कि सेकंड करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आई थिंक यू हैड ए टफ लक। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जेड इसको कैसे हैंडल करता है। आई थिंक दिस इज द ओनली क्वेश्चन वेयर वी हैव कंफ्यूजन, राइट। कैन वी मूव टू द 13 क्वेश्चन? गाइस प्लीज लाइक द वीडियो यार, लेट्स टारगेट फॉर 50 लाइक्स, and be here we will discuss DM sets also, all sets of DM will be discussed, right? Can we move to the 13? यस वही है ना, ए अगर इक्वल टू 1 होगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1 पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक वही करीब हो सकती है कि अगर ए इक्वल्स टू 1 है तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, राइट। तो स्टूडेंट का कोई मिस्टेक नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, फाइन। यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन द हार्ट बटन, लाइक का बटन अलग है, वहां पे जस्ट क्लिक ऑन दैट। सर थोड़ा जल्दी करो यार, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे तो भी आई थिंक इट वुड मेक मच सेंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? I think this was the question on the difficult side. How many of you attempted this question? And what is the answer that you guys are getting for this question?
क्विकली 7/15 61 डिनोमिनेशन में आ रहा था मेरा कुछ। आई वाज आल्सो गेटिंग 61 इन द डिनोमिनेटर। तो मैंने पर्सनली आई सिलेक्टेड none of the answers is correct, but a lot of people are getting 7/15 and 7/16 also. So there is a little bit confusion in this, है ना, मे बी थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, है ना। लेट्स नॉट गो इनटू दैट सॉल्विंग पार्ट, है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी देख के आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना सकते थे, दैट इज ऑल्सो ए गुड अप्रोच टू गो फॉर इन द एग्जाम, बिकॉज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन था। बट आई थिंक 7/15 is the thing mentioned by a lot of people, so maybe it might be the correct answer also, right? We never know. So just give me a minute, let me see somewhere if I can get the answer or some views about it. I think 7/15 should be the correct answer. 7/15 should be the correct answer for this. 7/15 we can say that it must be the correct answer, right? Coming on to this question, I think ये question भी काफी discussion में रहा है, काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, but I think according to me definitely the option A must be the correct, that the third lowest rating obtained is 37. This can't be possible according to me because हमारा जो fourth और fifth lowest rating था ना, fourth and fifth lowest rating, उसका शायद आई थिंक टोटल 70 आना चाहिए था, बट अगर थर्ड को 37 ले लोगे तो एटलीस्ट इनको 37 पुट करना पड़ेगा, दैट विल एक्सीड 70, राइट। 37 विल बी 74। तो आई थिंक 100% ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन था, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जैट में आया हुआ है 2-3 साल पहले, राइट, ऑन द सेम कंडीशन ओनली, राइट। 100% श्योर हूँ 37 वाला था। 37 वाले का आई थिंक आई एम 100% श्योर, द थर्ड लोएस्ट रेटिंग obtained is 37. This must be the definitely false. Coming on to this question, I think first and second together only, with the help of both the statements, we can find the correct answer. With the help of both the statements, we can find the correct answer for sure, right? दिस वॉज द इजी क्वेश्चन, दिस वॉज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ करना नहीं था ज्यादा, यू कैन जस्ट प्लग इन, यू कैन जस्ट डू सम रैंडम हिट एंड ट्रायल। आपको देखना था कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में आपको विन करना है गेम। सो आई थिंक 13 वॉज द करेक्ट आंसर, 13 वॉज द करेक्ट आंसर, है ना। हमें गेम को फिनिश करना था। काफी काफी लोगों का 12 आ रहा था, द रीजन फॉर 12 वाज, आई थिंक लकीली 12 इज नॉट इन द ऑप्शंस, बट 12 पे गेम फिनिश नहीं हो रही थी, गेम फिनिश हो रही थी 13 पे, दैट्स व्हाई आई थिंक 13 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई 13 इज द करेक्ट आंसर। गाइस प्लीज लाइक द स्ट्रीम यार, 70 प्लस पीपल आर देयर, इट वुड बी ग्रेट इफ यू ऑल जस्ट हिट द लाइक बटन, राइट, थैंक यू, राइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द डीआई पार्ट। डीआई पार्ट देखो यार, ये सेट में कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट था, राइट। नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, राइट। इवन इन द इंटायर सेट प्रीटी डुएबल सेट, राइट। थोड़ा बहुत गलती हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आई आल्सो डिड सम ब्लंडर्स, बिकॉज थोड़े बहुत ऑप्शंस इसके ट्रिकी थे, ऑप्शंस ट्रिकी इन द सेंस थोड़ा सा जल्दी करोगे तो यू वुड फॉल इन द ट्रैप। तो आई थिंक काफी लोग जल्दी की वजह से इसमें शायद किसी का गलत हो सकता है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द जेंडर गैप चेंज द लीस्ट फ्रॉम 2005 to 2025? व्हाट इज आंसर? आई थिंक आई वाज द सिटी इन विच देयर वाज अ लीस्ट चेंज, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आई थिंक आप ऑप्शन से कर सकते थे, पांचों ऑप्शंस को ले लो और पांचों ऑप्शंस में इतना लेंदी नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन तो लेंदी नहीं था बिकॉज पांच ही सिटीज को आपको एनालाइज करना था। इसका आप देख सकते थे एंड विद इन 2-3-4 minutes यू कुड हैव गेट द करेक्ट आंसर, राइट। सो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था बिकॉज आई थिंक a lot of students might have faced the problem in understanding the statements, और डेफिनेटली फॉल्स चूज करना था, मतलब in any condition it must be false only, right? So what was the correct answer that you guys mark for this? Correct answer should be, in terms of 2025 prices, the average monthly income of man of the 10 cities combined was less than 30,000 in 2005. So I think it was greater than 30,000. So that's why it must be definitely false. It must be definitely false. Right? Everyone.
Just give me a moment. I need to check your comments also, because now we will be starting soon with the DM. So it will be to and fro communication, right? Discussion. Shagar is saying मैंने तो A mark कर दिया. A in what? This question. नहीं नहीं, यहाँ पे तो C ही आएगा. I think C must be the correct answer, right? Coming on to the 19th question. Let's see what the 19th question says. राइट अगेन दिस इज विच कैन नॉट बी करेक्ट, मतलब कोई भी कंडीशन में ये करेक्ट नहीं हो सकती चीज. तो अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ने में समझने में मे बी किसी किसी को दिक्कत हो सकता है, राइट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. Right, thus unscaled gender gaps reduced in all 10 cities from 2005 to 2015. Right. uh, Now let's move to the next set. Right. uh, Talking about this set, ये DILR का कम मुझे थोड़ा क्वांट्स टाइप सेट ज्यादा लग रहा था, एंड थोड़ा सा डुएबल भी था, और आई वुड से थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड भी था, है ना. LR टाइप का भी सेट था, राइट. बट कुछ कुछ क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन तो फिर भी यहाँ से निकाल सकते थे, right? For example, which of the following can be true? What was the correct answer for this? Sumana scored 2 marks in the first test. That is the correct answer. Sumana scored 2 marks in the first test. That is the correct answer for this question. Right? Guys, please like the video. Let's target 60 likes, and then we will move to the next question. Please, please, quickly. Don't click on the heart button. Just close our chat box and then hit the like on the video. मीनवाइल लेट मी टेक योर डाउट्स. सर प्लीज कंफर्म, क्या इसमें दोनों वेरिएबल्स सेम ले सकते हैं? हाँ, मतलब ले सकते हैं, बट आई थिंक दैट वाज नॉट नेसेसरी, राइट. ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मतलब इक्वल हो सकता है, बट दैट वाज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू विन, राइट. प्लीज लाइक द वीडियो गाइस, जस्ट क्विकली लाइक द वीडियो. सर इवन बी सीम्स प्लॉजिबल फॉर क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 क्या था हमारा? क्वेश्चन 18 बी, दिस वन. किसी ने बी मार्क किया है क्या 18 में? गाइस प्लीज कंफर्म इफ समवन हैज मार्क्ड बी. क्विकली. डोंट नो यार. मैंने भी शायद एक्चुअली दिस सी आई फाउंड एट वेरियस सोर्सेज, बट personally I also marked B for this. I don't know why, maybe I might did some calculation mistake, but मैंने 2-3 बार कैलकुलेट किया था. तो personally I marked B for this question, but I think a lot of sources said that C must be the correct answer, so वो भी 22 के से ज्यादा आ रहा था. यस यस, 22 के से ज्यादा आ रहा था. आई एग्री टू दैट. आई कैलकुलेटेड 3-4 टाइम्स. आई थिंक 22 के से ज्यादा आ रहा था, तो मे बी वी माइट हैव बोथ करेक्ट ऑप्शंस, बी प्लस सी. बट आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज a lot of people are not talking about B as a correct answer, right? सर GRAPG देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन से ही सी होगा. यार मैंने पेपर जब अटेम्प्ट किया था तो मेरे पेपर में बी ऑप्शन पहले आया था, तो बी मैंने देखा तो बी मैंने मार्क कर दिया. बट बी इज ऑल्सो राइट, तो मे बी बी एंड सी बोथ माइट बी द करेक्ट ऑप्शन. तो जिन्होंने दोनों में से कोई भी एक किया है, आई थिंक एवरीवन विल गेट मार्क्स फॉर दैट, जिन्होंने सिर्फ बी और सी में से कुछ अटेम्प्ट किया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट. 21 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट. Let's discuss the 21 question, guys. Please like the video, right? 21 question. What is the answer for this? If Ravi scored 41 marks, 4 marks in the first test. Zero is the correct answer. Zero is the correct answer for this. Zero is the correct answer. Moving on to the next question. If Ravi scored 1 mark in the second test, what is the maximum possible values of Samana's total marks? I think again this was the easy question because उसने बोला हुआ था कि ये एक जीपी है, और जीपी के अकॉर्डिंग आई थिंक 2-3 केस आ रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑफ रवि स्कोर्ड 1 mark,
तो एक ही केस पॉसिबल हो रहा था, एंड उसके अकॉर्डिंग आई थिंक 9 मस्ट बी द करेक्ट आंसर. 9 must be the correct answer, right? Moving on to this set I would say it was a replica of cat 23, right? A ditto set of cat 23. एंड आपको पता लग गया होगा कि DI हमेशा हार्ड नहीं आता जेट में, राइट? काफी डुएबल सेट्स भी आए थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द डुएबल सेट्स, बिकॉज कैट 23 में डिट्टो सेट आया था, जोमेटो वाला, रेटिंग्स वाला, जहाँ पे डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट डिलीवरी पार्टनर्स को रेटिंग और रेस्टोरेंट्स को रेटिंग दे रहे थे, राइट? तो सेम ही क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना? कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें. सो व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? What rating provided by reviewer R1? I think 4 should be the correct answer. 4 should be the correct answer for this. Everyone, 4 is the correct answer, right? Chalo. Uh, for this question, what is the correct answer? In how many different ways could reviewer R2 have rated gadget B? I think वो या तो उसको 4 rating दे सकता था या 5 rating दे सकता था. So in only 2 ways the reviewer could have given the rating, right? There were just 2 ways, है ना? In only 2 ways the reviewer could have given the rating, right? Now coming on to this question, how many different valid combinations of missing ratings are possible, right? कितने combinations possible थे? 3 different combinations were possible. 3 different combinations were possible, right? 3 different combinations were possible. सभी का सही है ये सेट? आई होप काफी लोगों का इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो सही होंगे इस सेट में, right? At least 2 questions must be correct in this set. How many questions you have got correct in this set? एक का आंसर 4 था, एक का आंसर 2 था, एक का आंसर 3 था, राइट? 2 सही है. ग्रेट. नाउ आई थिंक या ये भी आई वुड से क्वांट्स का सेट था. कुछ रूट्स एंड नेटवर्क नहीं था. थोड़ा सा मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये रूट्स एंड नेटवर्क का सेट है, बट यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, एंड वैल्यूज वर ऑल्सो इजी टू कैलकुलेट, राइट? कुछ इतना हार्ड नहीं था, राइट? सो I am not solving the entire set here because then it will take a lot of time, right? Just discussing the right answer. The right answer for what was his total driving time closest to, I think the exact time was coming at 7 hours 28 minutes. गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट दे दिया. आई एम नॉट अवेयर अबाउट द जीओटी, बट वहां पे ये लोकेशंस होती हैं क्या? आई हैव हर्ड अबाउट द विंटरफेल. हाँ, तो काफी लोगों ने बोला था जीओटी का सेट है, सो माइट बी द केस. 7 hour 28 minutes is the correct answer, right? 7 hour 28 minutes is the correct answer. For this question, I think 6.67 kilometers south of Old Town. This is the correct answer. This is the correct answer. 6.67 kilometers south of the Old Town is the correct answer. Again, doable set था. थोड़ा सा फिगर देख के, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख के, थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट इसमें नर्वस हो सकता था, बट अगेन थोड़ा सा ठीक था. मतलब सेट इतना वो डिफिकल्ट नहीं था कि बहुत कुछ सोचना पड़े, है ना? टिपिकल जेट में कई बार सेट्स आते हैं जहाँ पे तुम्हें काफी दिमाग लगाना पड़ रहा होता है, राइट? आई थिंक क्वांट बेस्ड सेट था ये. एंड यहाँ पे आई थिंक द स्पीड रिक्वायर्ड वाज 120 किलोमीटर पर आवर. 120 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? एंड आई थिंक now we are done with the quant section. Quants is done, right? And whatever we have discussed, I think we have discussed almost all the questions, right? Now we will be moving to the DM part, right? So if you are attending this session live, DM के लिए what I will do is कि आप एक बार सब अपनी take 1 minute and open the response sheet on other mobile or on laptop, right? और साथ साथ हम compare करेंगे what you have marked for that particular question and what I have marked, right? Because इसका DM का आंसर किसी को भी एकदम 100% श्योरिटी से नहीं पता. बेसिकली आई कैन एक्सप्लेन what I marked and why I marked that, and I can be 100% wrong also in some questions, right? So I would want to discuss it for the sake of discussion only.
right? Don't rely on my answer, don't rely on Kreku answer, don't rely on XYZ coaching answer. वेट फॉर 2-3 days. बट हाँ, काफी लोगों का एक वो था कि सर एक बार डिस्कस करके देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, मे बी हमारा कुछ थिंकिंग लेवल मैच हो जाए, मे बी वी माइट गेट सम आइडिया कि किस लेवल का पेपर था. तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई एम डूइंग दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोज द करेक्ट आंसर, है ना? अगर पता होता तो एवरीवन वुड हैव रिलीज दैट. एंड टाइम सीएल इसीलिए पहले वो रिलीज करते थे डीएम के वीआरसी के आंसर, बट आफ्टर फ्यू इयर्स दे रियलाइज कि उनके आंसर्स हमेशा गलत होते हैं या जेड के आंसर्स थोड़े से टिपिकली अजीब से होते हैं. सो आफ्टर दैट दे स्टॉप्ड रिलीजिंग द करेक्ट आंसर्स और द ऑफिशियल आंसर्स, राइट, फ्रॉम देयर साइड. सो नाउ एवरीवन वेट्स फॉर द करेक्ट आंसर. एंड क्रैक वो हर साल करता है. आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, मे बी जस्ट टू बी द फर्स्ट इन दिस गेम. ठीक है, स्टार्ट करें. एवरीवन हु ऑल आर हियर, please put yes in the chat box if you have opened your answer sheet. If you have opened your response sheet, please put yes in the chat box so that I can get an idea and then we can start discussing the DM answers. Just put yes. Quickly, guys. Type yes, yes, yes in the chat box, guys. सभी ने ओपन कर लिया ना? बिकॉज विदाउट दैट वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस एनीथिंग. बिकॉज आपने फिर क्या डिस्कस किया है, क्या मार्क किया है, वो नहीं पता लगेगा, तो उसके बिना मजा नहीं आएगा डिस्कशन, राइट? So requesting everyone to please open it as soon as possible, right? Have you guys opened it? Hmm. Chalo, let's start. So let's first discuss this set, right? एक बार please open this set and let me also open in my answer sheet, right? So that I can also see what I have marked, because मुझे भी याद नहीं है, right, कि मैंने क्या mark किया and why I did that. So what is the correct answer according to you for this question? Which of the following reasons will best help Sukanta not to start making major changes immediately? What did you guys mark? A. क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस विल बेस्ट हेल्प सुकांता नॉट टू स्टार्ट, मतलब उसको इमीडिएटली कुछ नहीं करना, राइट? सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी ए पार्ट. द करेक्ट आंसर शुड बी दिस: सुकांता नीड्स मोर टाइम टू लर्न अबाउट द डायनामिक्स ऑफ द ईस्टर्न मार्केट, है ना? अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाई शी शुड नॉट मेक इमीडिएट चेंजेस, राइट? उसको थोड़ा सा लर्न करने की नीड है, सो आई थिंक शी शुड गो फॉर द ए, राइट? एवरीवन ओपन देयर द सेट on their laptop, right? Let's discuss this question. क्या बोल रहा था? Which of the following options will best help Adil to ignore the accusations from the competing media agencies and maintain status quo, right? Which of the following options will best help Adi, Adil to ignore the accusations from the competing media agencies and maintain status quo? What did you guys mark for this? उसको मीडिया एजेंसीज को इग्नोर करना है. He has to ignore the media agencies, right? So can I go with this? In Tivana, the competing media agencies keep defaming each other out of fierce competition, right? अगर उनको पता है कि ये कुछ भी फालतू बोलते रहते हैं just because of the competition, that he can ignore the accusations, right? Right. Again, I am putting a big disclaimer, guys. I might be 100% incorrect. Kraku can be incorrect. Everyone can be incorrect because Z जो आंसर देता है वो काफी लोगों की समझ से परे होते हैं, right? तो we are discussing this for the sake of discussion only, right? 82 people are there. Please like the video, right? Moving to the next question. क्या बोल रहा था? Disturbed by the situation, witnessing the internal turmoil,
Adil must now navigate the company's immediate reaction. Which of the following should now be Adil's best course of action? What should be the correct answer? Which should be the Adil's best course of action in this? काफी लोग सी बोल रहे हैं. सी, he should wait and watch as the investment in Sukanta may need to bear the result. I also went with with this reasoning only, right? This should be correct according to me, or I would not say this should be correct, but what I would say is that this is what I marked in the this is what I marked in the paper, right? डी बोल रहे हैं लोग, काफी लोग. हाँ, ऑप्शंस आर जम्बल्ड अप, राइट? ऑप्शंस आर जम्बल्ड अप, इसीलिए आप ध्यान से अपनी आंसर शीट का ऑप्शन पढ़ो कि आपने ऑप्शन की क्या, आपकी स्टेटमेंट क्या है. देन रिलेट इट विद द स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली फिर आप मुझे यहाँ पे बताओ, राइट? आई होप ऑलमोस्ट सभी का सी आया होगा. एनी अदर आंसर दैट यू गॉट फॉर दिस क्वेश्चन? बी क्या बोल रहा है? ही शुड मेक सुकांता एंड हिज टीम टू गो बैक टू जीडीएस इमीडिएटली. यार व्हाई वुड इट डू दैट? आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेंशन था कि इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू ग्रो, राइट? टू टाइम टू ब्रिंग द रिजल्ट. तो ये कहीं ना कहीं बोला था इन्वेस्टमेंट को टाइम लगेगा. डी क्या बोल रहे हैं? ही शुड थ्रेटन सुकांता. नहीं नहीं, क्यों थ्रेट क्यों करेगा? दैट इफ सेल्स डू नॉट इंप्रूव बाय नेक्स्ट ईयर, ही एंड हिज टीम विल बी फायर्ड. दिस इज नॉट हाउ यू शुड बिहेव, राइट? दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क. जब आपको पता है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट. डी तो बहुत एक एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया. और क्यों करना है आप? व्हाई वुड यू थ्रेट समवन? अगर आप अगर आप रिजल्ट, अगर लेट्स से यू आर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट, राइट? यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स. डू यू एक्सपेक्ट कि कोई आपको थ्रेट देगा आके, राइट? यू आर जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट पर्सन. तो ऐसा नहीं होगा. आई थिंक डी तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, बट देयर डी माइट बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द जेट, राइट? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर, की किसी को कुछ नहीं पता डी होगा या क्या होगा, बट आई थिंक सी हो सकता है. He should engage a different media agency which is working for True Color's main competitor. uh, यार देखो, ये बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन है. मतलब आपको एक साल आपने वेट किया, द थिंग्स डिड नॉट वर्क फॉर यू, एंड नाउ यू आर स्विचिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट मीडिया एजेंसी. बहुत बहुत ही ज्यादा फास्ट अप्रोच है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस. एवरीवन प्लीज ओपन दिस सेट. सर्च काइंड केयर ऑन योर रिस्पॉन्स शीट. प्लीज ओपन दिस सेट और स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना, है ना, कि क्या इसमें आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. ये वही सेट था ना जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है, दिस दैट, राइट? है ना? तो क्या बोल रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल लीस्ट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल, राइट? कैफेटेरिया को बंद कर दो, पहली बात तो. सबसे पहले कैफेटेरिया तो बंद ही करोगे आप, है ना? तो आई थिंक शट डाउन द कैफेटेरिया मस्ट बी इन द आंसर. तो बी 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 बी, ये तो नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं होगा, राइट? देन देखो, रिड्यूस देयर आउटपेशेंट कैपेसिटी टू हाफ. आई थिंक दिस शुड नॉट हैव बीन डन. सो दिस मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ आंसर. तो ए तो नहीं हो सकता, कोई भी आंसर में ए तो नहीं हो सकता. नाउ आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को ए और सी में कंफ्यूजन था, क्योंकि बी सी तो हो रहे हैं. डी और ई में कौन सा आएगा? स्ट्रिप द फार्मेसी ऑपरेशंस डाउन टू इमरजेंसी एंड क्रिटिकल मेडिकेशंस, और शट डाउन द मेडिकल लैब एंड अरेंज मेडिकल टेस्ट फ्रॉम ए लोकल लैब, राइट? सो either A can be correct or either C can be correct also, right? Let me tell you what I attempted for this question. What I marked for this question was uh, kind care, right? Let me search kind care. What I marked for this is I marked BCE as the correct answer. I marked BCE as the correct answer, right? BCD can also be the correct answer, right? I do not have very strong reasoning for either D or E, right? तो नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि जेट अथॉरिटीज क्या करती है, राइट? राइट, बट ए और बाकी बी डी ई तो आई थिंक थोड़े से गलत ही होंगे. ए बिकॉज मेडिकल लैब इज इन हॉस्पिटल. हाँ, ए बिकॉज मेडिकल हॉस्पिटल लैब वॉज स्टिल वैल्यूज. अच्छा, देख लेते हैं.
shut down the medical lab and arrange medical tests from a local lab, strip the pharmacy operations down to emergency and critical conditions. Okay, okay, I think this is making sense, this is making sense. So maybe BCD might be the correct answer. थोड़ा सा ये ज्यादा सेंस बना रहा है, right? Understood, understood, right? Understood, right? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. I think A may be the correct answer. Let's move to the next question. Which of the following actions best ensures kind care operates efficiently during the renovation of the storage unit? Right? Which of the following best ensures kind care operates efficiently during the renovation of the storage unit? What did you mark for this? आपको देखो फोकस क्या करना है क्वेश्चन में, स्टोरेज यूनिट को एफिशिएंटली ऑपरेट करना है. तो सबसे पहले क्या उड़ाओगे? सबसे पहले क्या उड़ाओगे? कैफेटेरिया को बंद करो सबसे पहले, राइट? सबसे पहले कैफेटेरिया को बंद करो, है ना? कैफेटेरिया इज आई थिंक द वैल्यू एडेड सर्विस, राइट? इट इज नॉट द इम्पोर्टेंट और द मेन सर्विस. तो कैफेटेरिया को उड़ाओ, शट डाउन द कैफेटेरिया अंटिल फर्दर नोटिस एंड रीलोकेट द स्टोरेज यूनिट, राइट? सभी ने ए डाला है, सॉरी सभी ने बी मार्क किया है. अभी तक तो काफी सेंस बना रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई अननेसेसरी ऑप्शन तो नहीं मार्क किया मैंने, है ना? आई होप एवरीवन एग्री टू दिस. ठीक है. हाँ, ऑल्सो देयर वाज लोकल रेस्टोरेंट, तो कैफेटेरिया बंद कर दो तो भी चल जाएगा, राइट? और थोड़ा रिलेट करके भी देखो यार कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, सो यू यू जनरली डू नॉट थिंक अबाउट द फूड पार्ट, राइट? कहीं से भी खाने को कुछ भी मिल जाए, द सर्विसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? लेट्स डिस्कस 34 क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफर्स द मोस्ट सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल पे फोकस करना है हमें. सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर काइंड केयर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टर्न्ड अवे, right? So you have to reduce the number of patients being turned away, and you have to find the most sustainable solution for this, right? So what did you guys mark for this? E. A lot of students are saying E, some are saying B. Okay, I think there is a clash between B and E. What about other people? B and D. So let me tell you what I marked for this question. I marked D as the correct answer. Right. Again, I'm saying I can be completely wrong here also. Right. But let's discuss this in detail. I think बी और ई काफी लोग बोल रहे हैं, है ना? और ऐसा नहीं है यार कि अगर मेजोरिटी, आप अगर किसी का बी और ई से बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, इफ यू हैव अटेम्प्टेड ए और सी, तब भी यू कैन बी करेक्ट, राइट? यहाँ पे अगर लोग बी ज्यादा बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग ई ज्यादा बोल रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि बी और ई करेक्ट आंसर होगा, राइट? वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट, राइट? डू नॉट टेक इट योर टू योर हार्ट, राइट? दिल पे मत लगाना इसको, बिकॉज जब आप जेड की आंसर की देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये आंसर कैसे हो सकता है, इतना वियर्ड आंसर कैसे हो सकता है. देन यू गाइज विल चैलेंज देम, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिप, राइट? सो डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट, राइट? लेट्स डिस्कस. क्या बोल रहा है? सस्टेनेबल सॉल्यूशन बोल रहा है फॉर द काइंड केयर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टर्न्ड अवे. सो बी वाले क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजनिंग फॉर बी? लेट्स रीड द ऑप्शन बी. स्टार्ट reduced operations gradually and hire a team of experts to find ways to expedite the renovation. Start reduced operations gradually and hire a team of experts to find a ways to expedite the renovation. I don't think B is making much sense यार. बिकॉज अगेन आप एक एक्सपर्ट्स की टीम बुला रहे हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम नहीं लेंगे. You are bringing the expert to expedite the renovation part, but you do not know the exact time that they will take, और मे बी वो आके कह दें कि हमें तो इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा. ई क्या बोल रहे हैं?
E is saying resume some operations from rented spaces scattered around the region. uh yeah, scattered around the region थोड़ा सा dicey लग रहा है. This will reduce the number of patients being turned away and will still be in the market. I understand your part. uh but rented space लेके scattered around the region, maybe it might be correct. The reason why I marked D as the correct answer during my attempt, because इसमें देखो cost तो obviously triple the cost है, I agree that. but यहाँ पे stake पे क्या था? Strong public resentment, our reputation, right? And also a lot of patients were also affected, right? So we had to find the sustainable solution, मतलब जो लंबा चल जाए, है ना, कुछ temporary ना हो. तो ये थोड़ा सा मुझे temporary लग रहा था. एंड यहाँ पे मुझे लग रहा था, सी, a lot of students might not have gone for the D because यहाँ पे cost की बात हो रही है. बट हमें कहीं ये नहीं बोला कि cost कम लगाना है, ज्यादा लगाना है. बट हमें यहाँ पे गारंटी मिल रही है to finish the work in 3 days. तो 3 days में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, राइट? सो आई थिंक दैट कैन हेल्प यू टू कंटिन्यू द सर्विसेज. दैट्स व्हाई आई चोज द डी, राइट? बाकी देखो यार, है ना, बाकी देखो क्या होता है. हाँ, ए एंड सी तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, आई एग्री टू दैट, राइट? बट लेट मी टेल यू फन फैक्ट ऑल्सो. कल को ऐसा भी हो सकता है कि ए माइट बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल की, राइट? सो यू हैव टू बिलीव द ऑफिशियल की ओनली. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ओनली. ठीक है? Can we move to the next question, people? Just put yes. Can we move to the next question? Guys, please like the stream here. Let's expect 100 likes. Let's expect 20 more likes. I think 120 people are there. Even if you do one like, I think it will cross the number. Chat GPT is 100% correct. Sorry, Chat GPT is 100% incorrect. Even if you ask the Chat GPT to do a quants question, it is 100% incorrect only. So DM और ये सब में तो rely कर ही नहीं सकते, right? Guys, please like the video यार, quickly. नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेट. ये क्या सेट था? ये तो हमारा नॉर्मल सेट था ना, बी स्कूल वाला, है ना, राइट? तो सेट तो समझ आ ही गया होगा सभी को, सेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस सेट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस विल बेस्ट हेल्प? फर्स्ट ओपन दिस सेट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर डिवाइसेस. सर्च आर्या, यू विल फाइंड दिस सेट. खोल लिया सभी ने सेट? नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following considerations will best help Arya decide whether to apply for the online management certificate program? है ना? तो बेसिकली शी वॉज नॉट वेरी श्योर कि ऑनलाइन मैनेजमेंट प्रोग्राम उसको हेल्प करेगा या नहीं करेगा और कैसे करेगा, राइट? सो व्हाट विल बेस्ट हेल्प हर, राइट? एक ऐसा ऑप्शन चूज करना था. आई थिंक अगेन यहाँ पे काफी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स किया होगा, राइट? काफी लोगों ने बी किया है, काफी लोगों ने ई किया है. Okay, a lot of students, those who complete this online management certificate program do well in their career. ई में क्या बोल रहा है? आर्या feels that online program is light enough to manage while working full time. यार देखो, आर्या की प्रायोरिटी क्या थी? What was the priority of आर्या? The priority was to get better education and better placement. यही बोला था ना कहीं ना कहीं. Inspired to follow the same path. Career growth, potential salary increase, right? है ना? तो यही आर्या आर्या को आर्या की मोटिवेशन भी यही थी, है ना? आर्या का भी कंसर्न यही था. सो प्रायोरिटी ये नहीं थी कि यार वो ऑनलाइन एमबीए मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. प्रायोरिटी वाज कि वेदर शी विल बी एबल टू गेट द सिमिलर रिजल्ट्स थ्रू द सर्टिफिकेट प्रोग्राम और नॉट, राइट? आप वेदर टू अप्लाई फॉर, ऑब्वियसली दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर कि प्रोग्राम लाइट है या नहीं लाइट है ना? बट आई थिंक द प्रायोरिटी वाज आल्सो टू आल्सो चेक कि वेदर शी विल बी एबल टू डू वेल इन देयर करियर विद दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम. बिकॉज वो ये प्रोग्राम में जाना क्यों चाह रही थी? टू मैनेज द टाइम वेल. But that was the one of the factors, but the primary factor I think was to, if she gets to know that those who complete this online management certificate program do well in their career, then I think she will make a choice, right? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसको ये बात तो ऑलरेडी पता है ना कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम्स हैं,
right? They do not take that much effort from, or they do not expect that much effort from your side, right? क्योंकि उसकी फर्म ही करवा रही है, राइट? द सीईओ ऑफ आर्या फर्म टाइड अप विद द प्रीमियर बिजनेस स्कूल एंड दिस, तो उसकी तो फर्म ही वो चीज करवा रही है, तो उसको अब यही सोचना है कि टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द पॉइंट इज कि ये तो उसकी फर्म ही करवा रही है ना कंडक्ट। सो द प्रायोरिटी मस्ट बी कि वेदर शी विल बी एबल टू ग्रो इन हर करियर और नॉट, राइट? ठीक है, मे बी, might be the correct answer also. She feels that online program is light enough to manage while working full time. मे बी, बट आई थिंक यार, जितना मेरी नॉलेज है, आई थिंक बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एटलीस्ट बी और ई में तो आई थिंक बी इज द स्ट्रोंगर, बट लेट्स सी, है ना? हाँ, इधर बी और ई ऐसा बोल सकते हैं, राइट? इधर बी और ई। चलो जी, राइट। एंड आई विल ऑल्सो compare our answers with the official answers once the official answer key is out. I think that will be a fun part, right? तो वहां पे देखेंगे कि how did we guys discuss this thing and how did the Z come up with the answers, right? So यहाँ पे क्या बोल रहा था, आर्या was worried whether being a candidate with minimal experience she would be a good fit in the executive MBA program. Which of the following considerations would best help Arya in taking admission in the 1 year executive MBA program? Right? Which of the following will best help Arya to take admission in 1 year executive program? So what did you mark for this? I think this must be a clear choice. वो enroll कब करवाएगी? आर्या enroll कब करवाएगी? When Arya gets to know that she can climb up the ladder through the executive MBA program, right? Right? यहाँ पे तो I think everyone agrees to this. But again, I am saying Z का कुछ अलग आंसर हो सकता है, तो हो सकता है. But I think a lot of people have attempted this question and marked D only, right? चलो 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्य कंसिडर्ड द होल एपिसोड ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड वंडर्ड इफ इट वुड at all be worthwhile to be associated with this business school. What was the name of this business school? I think it must be MDI only. MDI did this thing last year. Which of the following considerations will best restore her faith in this business? Right? कोई ऐसा ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है that will restore the faith of आर्या in the same business school? मतलब उसको ट्रस्ट रहे कि यार ये बिजनेस स्कूल अच्छा ही है, she should not have some negative thoughts about it. C, क्रैकू का छोड़ो यार, तुम बताओ तुमने क्या किया है। A lot of people marked C, okay, a lot at C and किसी किसी ने D भी मार्क किया है, so maybe C, maybe D। कुछ और मार्क किया है किसी ने? ठीक है। सो क्या बोल रहा है, द बिजनेस स्कूल ऑन द मिस्टेक एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प द अफेक्टेड कैंडिडेट्स। दिस माइट बी द करेक्ट आंसर। एंड डी क्या बोल रहा है, ए सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड 3 years बैक इन अनदर बी स्कूल एंड ऑल एफर्ट कैंडिडेट्स इवेंचुअली गॉट गुड प्लेसमेंट्स, राइट? डी भी मेक डी ऑल्सो मेक सेंस, राइट? थोड़ा सा सिचुएशन पढ़ ले, क्या बोल रहा था? Consequently, candidates lower on the merit list, including Arya, were being offered a choice from the following options: a deferred admission, this or a full. They also said if interested, Arya could right now join a similar program starting in a newly launched campus of the same business school where many seats were available. Arya considered the whole episode a breach of trust and wondered if it would at all be worthwhile to be associated with this business school now or in the future. Right? So अब देखो, आर्या के पास काफी ऑप्शंस हैं। आर्या के पास एक ऑप्शन ये भी है कि आर्या उस बिजनेस स्कूल को लीव भी कर सकती है। आर्या कैन गो समवेयर एल्स आल्सो, राइट? नाउ इफ इवन इफ बिजनेस स्कूल ऑन्स द मिस्टेक, राइट, एंड ट्राइज टू हेल्प द अफेक्टेड कैंडिडेट्स, विल दिस इंश्योर कि जो उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी वो 100% अच्छे रिजल्ट्स ही लाएगी, 100% बेटर प्लेसमेंट्स ही लाएंगी? हेल्प इज जस्ट दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम, राइट? इट डज नॉट इंश्योर कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जिस माइंडसेट से आप एंटर हुए थे, जिस एक्सपेक्टेशन से आप एंटर हुए थे, दैट एक्सपेक्टेशंस विल बी फुलफिल्ड। डी में भी थोड़ा सा इशू ये है कि इट इज कंपेयरिंग विद अदर बी स्कूल्स, है ना?
बट आई थिंक चाहे बाकी बी स्कूल से कंपेयर करें, चाहे सिमिलर इंसिडेंट विद द सेम बी स्कूल से हो, दे आर जस्ट, आई मीन, इवन इफ यू नो कि यार ऐसा होता रहता है, राइट, ऐसा होता रहता है, तो डी माइट ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर. पर्सनली आई मार्क डी, but I think C also sounds good. So maybe C or D, either of them can be the correct answer. हाँ, तो अनदर बी स्कूल में ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल देखो, एमडीआई ने अगर 2 बार कर दिया, नाउ अगर रियलिटी में अगर कोई और बी स्कूल करे, लेट्स से आईएफटी डज द सेम थिंग, तो आप बोल दोगे कि यार ठीक है, एमडीआई ने भी किया था, उन्होंने अच्छे से हैंडल कर ली थी ये सिचुएशन, तो आईएफटी भी कर लेगा, है ना. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर दूसरे बी स्कूल का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं. तो ठीक है, ठीक है. आई थिंक सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ लिटिल डाइसी, है ना. दिस इज अ लिटिल डाइसी, राइट. चलो जी, ये सेट क्या था हमारा. दिस सेट वाज अबाउट, लेट मी रिकॉल. अच्छा, यहाँ पे ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग कंपनी थी, राइट. ट्रेनिंग असाइनमेंट ऑफिसर, सो सीनियर ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर, है ना. चलो. सो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड धीरज एग्जीक्यूट टू बेस्ट इनेबल द यंग ट्रेनर्स टू गेट मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज. एवरीवन प्लीज ओपन दिस सेट ऑन योर डिवाइसेस. Everyone, please open this set on your devices. Which of the following options should Dheeraj execute to best enable the young trainers to get more training opportunities without affecting their relationship with the client companies? Search Dheeraj and tell me what is the correct answer for this. CE. A lot of students marked C as the option. A lot of students marked E as the option. Okay, so Dheeraj need to enable the young trainers to get more opportunities and increase their training engagement. So C और E में काफी confusion है लोगों को. C क्या बोल रहा है? Dheeraj should mandate that senior trainers must allow the young trainers to take at least 30% of their training sessions. Dheeraj should explore for those clients who would be comfortable working with the young trainers. अब देखो, सी और ई में क्या है. ई में वो क्या बोल रहा है कि 100% एलोकेट कर दो, मतलब एक क्लाइंट को 100% यंग ट्रेनर्स एलोकेट हो सकते हैं. वेयर एज सी में क्या हो रहा है, धीरज शुड मैंडेट दैट द सीनियर ट्रेनर्स मस्ट अलाउ द यंग trainers to take at least 30% of their training sessions. So generally what happens in the real world also, so for example, when you join some consulting companies, right, and when it comes to delivering the presentation to the client, right, you don't start with delivering the 100% of the presentation. You start going out with your director or with your manager, and whereas your manager delivers 90% of the presentation and the rest 10% 20% is delivered by you, right. So I think that should be the best approach, because ई में क्या है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट. आपको उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको फुल अपॉर्चुनिटी दे दो एकदम से, राइट. दे माइट नॉट बी द राइट फिट फॉर द क्लाइंट, राइट. हमें सबसे पहले क्लाइंट को सोचना है, बिकॉज वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स. क्लाइंट्स को एक ऐसा बंदा दे देंगे हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, विजा विजा सिचुएशन जहां पे हम क्लाइंट को एक ऐसा बंदा देंगे, है ना, जो बस 30% काम मैनेज करेगा, 70% इज मैनेज बाय द सीनियर्स ओनली. सो आई थिंक इन दिस केस सी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. सी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, might be यार, might be the case विश्वा श्याम प्रेमी, आपकी रीजनिंग भी ठीक है, बट anyways, let's focus on this question. Which of the following actions would best help Sudha to stop Dheeraj from assigning her programs to the young trainers? Which of the following actions would best help Sudha? ऐसा कुछ क्लाइंट का लफड़ा हुआ था ना इसमें, कि द प्रोजेक्ट ऑफ सुधा was done by some young trainer, right? तो फिर क्लाइंट ने कंप्लेन किया था, ऐसा कुछ था, राइट. एम आई करेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 9 डी बोल रहे हैं सारे,
है ना, डी, she should share with धीरज that assigning her client companies to novice trainers will lead to loss of those clients, है ना, lead to loss of those clients. I think this should be the correct answer. I also mark D in this, right? D seems good to go. यार सीईओ के पास नहीं जाएगी फॉर दिस पार्ट, राइट? इट इज धीरज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सीईओ के पास क्यों जाएगी? शी शुड कॉन्फ्रंट द सीईओ एंड शेयर दैट हिज कंसर्न शुड नॉट बी एड्रेस्ड एट द, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सीईओ के पास वो जाएगी. सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 40 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट बेस्ट कैन नंदिनी डू टू रीगेन द क्लाइंट फॉर हरसेल्फ without appearing to be against the organization's focus on providing the young trainers more opportunities? What is the correct answer for this question? What is the correct answer? Please tell. People are saying B. Okay. Uh, what best can Nandini do to regain the client for herself without appearing to be against the organization? तो देखो client थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, but Nandini wants to get that client, and Nandini wants to does not want to uh, pose a picture of herself as harming the organization and all that stuff, right? So थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करना है. लोग बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ई भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं. लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड. आई मार्क्ड सी एज द करेक्ट आंसर, बट लेट मी रीड आउट द अदर ऑप्शंस आल्सो, राइट? बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेट था ये. Propose to Dheeraj that in future assignments with the client, Kirti be a co-trainer with the Nandini to help improve her performance. Engaged in a follow-up conversation with the client, requesting that they communicate their concerns to the CEO directly, and arrange meeting with the धीरज informing him that she is aware of the situation. यार देखो, वो धीरज को डायरेक्टली अप्रोच करेगी ना इन दिस पार्ट, तो अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन हर कि वो थोड़ा सा शी इज इंटरवीनिंग इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो यही चाहती है ना कि जो कृति है या जो कीर्ति है ना, वो डायरेक्टली प्रेजेंट करे, बट द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी. बट अगर क्लाइंट यही बात बोलेगा धीरज को या सीईओ को, देन आई थिंक इट विल नॉट बी अपॉन नंदिनी, राइट? नंदिनी का फिर वहां पे कोई भी रोल नहीं रहेगा, एंड नंदिनी का जो मोटिव है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और नंदिनी की कोई बैड इमेज भी नहीं बनेगी. Right, this is my view, but I think a lot of you are saying B as the correct answer, right? But majority does not matter in the Z. B may be the correct answer, C may be the correct answer, A may be the correct answer, we do not know. But this is why I selected C as this is my reasoning why I went for the C, right? uh, E में भी सेम प्रॉब्लम है यार. अरेंज ए मीटिंग विद धीरज इन्फॉर्मिंग हिम, अगर आप खुद इन्फॉर्म करोगे ना तो अगेन that will that will create a bad picture of you, right? Because you are complaining and you are going against the organization. यहाँ पे भी थोड़ा सा वही फंडा हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइंट अप्रोच कर रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, बिकॉज यू आर असाइनिंग मी यंग ट्रेनर्स, आई वांट सीनियर ट्रेनर. सो आई थिंक देन दैट मेक्स मच सेंस. बट अगेन बी may be the correct answer, C may be the correct answer. No hard rule on that. So let's go for the 41. 41 थोड़ा सा अच्छा सेट था. मे बी यहाँ भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग था इसमें वो भी एज सच कुछ डायरेक्टली ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि दिस विल बी द करेक्ट, दैट विल नॉट बी द करेक्ट. सो लेट्स सी which okay, first open this set on your laptop or on your desktop. हाँ हाँ ठीक है, लीव लीव दैट क्वेश्चन यार, बी सी जो भी है उस क्वेश्चन में, वट एवर इट इज, लीव दैट क्वेश्चन. ओपन दिस राम्या सेट. यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है, आपकी रिस्पॉन्स शीट में ऑर्डर डिफरेंट होगा, सो प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ऑर्डर ध्यान से पढ़ के आंसर करना. व्हाट डिड यू मार्क फॉर दिस? बी. Any other answers apart from B for this? Most of the students marked B. I think I also marked B for this.
Ramesh should publish the article because any investigation by Aditya Savroop has enhanced the reputation of pluralist till date. Right. Few mark D also. A B C D E. Everyone is saying different. Ramesh should publish the. ठीक है. Question क्या बोल रहा था? Let's go through the question first. Question क्या है हमारा? ठीक है. राम्या देखो थोड़े से बैकलैश भी आ सकते हैं बट इट माइट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑल्सो सो वी हैव टू फाइंड द रीजन विच विल बेस्ट इनेबल राम्या टू पब्लिश द आर्टिकल. राम्या शुड पब्लिश द आर्टिकल बिकॉज our legal team is mostly over cautious about any possibility of backlash. This might make sense but when you compare A and B I think B makes much sense, right? B is a stronger option, right, compared to A, so I think A तो नहीं होगा. सी में आते हैं. रामेश शुड पब्लिश द आर्टिकल बिकॉज द सेम न्यूज कैन गेट पब्लिश्ड बाय अ कॉम्पिटिटर नॉन फॉर ब्रेकिंग सच न्यूज. यार सी भी देखो सी बहुत ना एक लूज रीजन है, राइट? बिकॉज जस्ट योर कॉम्पिटिटर कैन डू दैट. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द वैलिडिटी, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द बैकलैश. बस आप सोच रहे हो कॉम्पिटिटर कर देगा तो हमें भी कर देना चाहिए. थोड़ा सा लूज रीजन है. Ramya should publish the article given the time sensitive nature of the report. I thought about this, but I couldn't get the meaning of the time sensitive nature of the report. So maybe it is trying to hint at the fact कि अभी release करोगे then you will get some good traction. Ramya should publish the article because a similar article was published on another mining similar article. This does not make much sense to me. So during the exam, I think only B made sense to me, not B because in question it's given some information might be wrong. यस यस सम इंफॉर्मेशन माइट बी रॉन्ग, राइट? वो तो देखो वो तो उसने कंफ्यूजन के लिए डालेगा ही. दैट विल ऑलवेज बी देयर. कुछ कंडीशन गलत होंगी कुछ सही होगा बट लेट्स सी. आई थिंक आई कंपेयर्ड ऑल द ऑप्शंस तो मुझे तो बी ही सही लगा, राइट? डी माइट बी द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस आफ्टर बी और देयर मे बी बी और डी. बट ए सी ई में तो मुझे नहीं लग रहा. ए सी ई में तो मुझे नहीं लग रहा. बी और ई में मे बी वन माइट बी द one of them might be the correct answer, right? Now let's do this question. What is the most responsible action should Jubin take keeping in view the recent developments due to the inaccuracies of the article? तो वहां पे यही पता लगा ना कि आर्टिकल काफी inaccurate था. There were only two employees who were interviewed for that from the mining company. ये वो है ना, थोड़ा biased आर्टिकल था तो ये वो लफड़ा हो गया था. So what could be the correct answer for this? This was I think a very confusing question for me बिकॉज सारे आंसर चॉइस कहीं ना कहीं खराब भी लग रहे थे और कहीं ना कहीं वो ठीक भी लग रहे थे. आई थिंक दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन योर रिस्पॉन्स ऑल्सो. ए लॉट ऑफ पीपल आर मेंशनिंग सी. बी भी मेंशन कर रहे हैं, डी भी मेंशन कर रहे हैं, ए भी मेंशन कर रहे हैं लोग. अच्छा काफी लोग सी मेंशन कर रहे हैं. मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर मेंशनिंग सी एंड ए भी मेंशन कर रहे हैं. बी भी मेंशन हो रहा है. सो मेनली ए बी एंड सी, राइट? ए क्या बोल रहा है? रिट्रैक्ट द एंटायर आर्टिकल एंड पब्लिश राम्याज apology in the newspaper. I don't think this is required, right? Why do you want to apologize, right? There could be other better measures, right? I think other better options were there. So A तो नहीं होगा मेरे हिसाब से. B में देखते हैं क्या बोल रहा है. Publish an article accusing the mining company of bullying witnesses to change their versions. Again, this is not making any sense यार. B तो नहीं होगा because B कैसे सेंस बना रहा है? Is it mentioned anywhere that they were bullied? ये कहीं नहीं मेंशन था, राइट? That they were bullied, right? It was not mentioned anywhere. So I don't think this A and B can be there. C published a modified version of the article next day defending the investigative journalism of Aditya Savroop. Uh, See, I think rather than defending your investigative journalism, because you know that the sources that you used were not very correct, so you might apologize or you might publish a modified reason or something like this, right? So you should admit that. So I think C, यार C मुझे नहीं लग रहा. A lot of people have marked the C but I don't think कि C हो सकता है.
रीट्रैक द इंटायर आर्टिकल एंड पब्लिश दैट आदित्य स्वरूप विल नो लॉन्गर, ये तो बिल्कुल बकवास है, डी तो नहीं होगा, डी विल नॉट बी देयर फॉर श्योर। ई क्या बोल रहा है, पब्लिश ए फॉलो अप आर्टिकल डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सोर्सेज यूज फॉर आर्टिकल, एट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरर्स टू देम। और ये भी देखो थोड़ा खराब तो लग ही रहा है ऑप्शन, बिकॉज यू आर जस्ट पुटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। बट अब देखो यार, अगर वैसे देखोगे तो मीडिया रिपोर्टर्स का काम क्या होता है, दे इंटरव्यू यू एंड दे पब्लिश दैट। अब दे डू नॉट फैक्ट चेक एवरीथिंग, राइट? अब उसका फैक्ट चेक तो हो भी नहीं सकता कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, राइट? सो आई थिंक सी, तो सी वीक लग रहा है, मे बी ई हो सकता है, बट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सेइंग कि ए भी हो सकता है, तो ए को दोबारा पढ़ लेते हैं। रीट्रैक द एंटायर आर्टिकल एंड पब्लिश राम्याज एपोलॉजी इन द न्यूज़पेपर। राम्याज एपोलॉजी इन द न्यूज़पेपर, हु इज राम्या? यार राम्याज एपोलॉजी, हु इज राम्या है यार? Yes, E also makes sense to me. A might be the correct also. A or E maybe. राम्या कौन है राम्या यहाँ पे? Why I'm not able to find anyone named as राम्या? अच्छा, राम्या is the girl who permitted the publication of the article. तो राम्या को तो यार मुझे नहीं लगता, see this thing should be answered on the behalf of company. Nobody knows who is the Ramya, right? I think this should be published in the name of pluralist. Nobody knows who is Ramya. Nobody cares about the Ramya's apology. If it had been the apology from the plurist side, I think it would have make much sense, right? तो शायद मेरे हिसाब से ई भी हो सकता है, राइट? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आई एम लिटिल बायस्ड हियर बिकॉज आई मार्क्ड ई एज द करेक्ट आंसर, राइट? बट दिस वाज अगेन, एज आई सेड दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यहाँ पे सारे ऑप्शंस ही थोड़े थोड़े बहुत बेकार थे, राइट? सो सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Let's move to the next part. So what it is saying, which of the following actions by Jubin will best enable Aditya Swaroop to enhance his diminishing reputation? Which of the following actions by Jubin will best enable Aditya Swaroop to enhance his diminishing reputation? What could be the correct answer? This was a good question. I don't know what answer the Z authorities will give for this, but अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इन केस वो उस टाइप से सोचते हैं जैसे आई थॉट। सी डी बोल रहे हैं काफी लोग, सी डी। फ्यू आर सेइंग ई, फ्यू आर सेइंग ए। सी क्या बोल रहा है, आस्क आदित्य स्वरूप टू फोकस ऑन मेंटरिंग न्यू एंड यंग जर्नलिस्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एनी। सी इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज it will not enhance diminishing reputation, right? You have to focus on enhancing the diminishing reputation. How C is making sense? C is not making any sense according to me. Maybe the correct answer, I don't know, but as of now it is not making any sense. डी क्या बोल रहा है, असाइन ए न्यू इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट टू आदित्य स्वरूप एडवाइजिंग हिम टू फोकस ऑन द न्यू प्रोजेक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द पास्ट प्रोजेक्ट। दिस इज डी seems like you are running away from the responsibility. You are just again, this might not enhance the reputation. This is just that you are taking another work, right? You are not thinking about the past work, you are just taking another work, and that's how you want to continue. May not be the best option according to me. What else? A, tell Aditya Swaroop that he plans to delegate the mining company project to a fresh team who will work in consultation with the Aditya Swaroop. I think A might be the correct answer. The reason for this is कि अगर न्यू टीम वहां पे सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करेगी, राइट, एंड इफ दे गेट समथिंग कॉन्क्रीट आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, देन वो उस टीम को हैंडल कौन कर रहा है? उस टीम को हैंडल एक टाइप से आदित्य स्वरूप ही कर रहा है। एंड इफ द न्यू टीम गेट सक्सेस इन दैट, the reputation of Aditya Swaroop will increase, right? The reputation of Aditya Swaroop will increase, right? Let's talk about E. Assign Aditya Swaroop to work as an anonymous journalist for the next few months until he feels confident of himself. ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा। एनोनिमस होके क्या हो जाएगा?
I don't think this will make sense, right? If you go anonymous, how would it improve the reputation until he feels confident of himself? Just by being anonymous, I don't think it will improve the reputation, right? I mean, take the case of Sayandeep, right? He posted on social media that 204, 204, he scored 204 out of 204. Now he's completely gone somewhere. Will it increase his reputation? I don't think. Maybe I might be wrong here, right? But as of now, I don't think it is making much sense to me. अरे ठीक है ऋषि यार एकदम you are going too bullish on E, right? Nobody knows the correct answer. Rishi, please get that. Neither me nor you nor any other person, right? Even if I say that E is the correct answer, right? Even if I say E is the correct answer, that will not change the official answer, right? So I'm just discussing. Please be gentle. सभी के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं यार. Anyone can be correct. सी बोल रहे हैं काफी लोग. सी क्या है? आस्क आदित्य स्वरूप टू फोकस ऑन मेंटरिंग न्यू एंड यंग जर्नलिस्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एनी इन्वेस्टिग. द पॉइंट इन सी इज कि यार वो उसकी रेपुटेशन को इनहेंस कैसे करेगा? दैट इज द पार्ट. उसकी रेपुटेशन को इनहेंस कैसे करेगा? दैट इज द कंफ्यूजिंग पार्ट. सो एज ऑफ नाउ आई माइट गो विद द ए, राइट? आई माइट गो विद द ए, बट लेट्स सी. ठीक है, चलो. Again I am saying यार nobody knows the correct answer. So I mean, if I had known the correct answer, I would have scored 21 out of 21, right? तो ऐसा नहीं है कि सब करेक्ट आंसर है. आई कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आई डिड. आई माइट बी 100% रॉन्ग, आई माइट बी अ लिटिल बिट करेक्ट ऑल्सो, राइट? So that's why I'm just saying that this is a discussion. This is not a discussion of correct answer. This is just discussion of what you did, why you did, what I did, why I did, right? So let's move to this. Uh, this was question related to the lawyers, right? And this was something related to उनका जो culture है, right? The orientation part strict है, hectic है, ये सब था ना इसमें, right? Please open this set. Open this set on your laptop or open this set on your desktop, right? Let's see 44 क्या है. Which of the following options will best enable Lisa to save the newcomers from the socialization ritual without being singled out for questioning the organization's culture? अब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. Lisa does not want to get singled out, right? But Lisa also wants to focus on the organization culture. बताओ what can be the correct answer? A. Rishi Agarwal is saying B repeatedly, so I have to consider B also. So A lot of people are saying A lot of few are saying B. एंड थोड़ा सा रीजन भी दोगे तो बेटर रहेगा. जैसे हरि कृष्णा इज सेइंग डी बिकॉज इट विल नॉट सिंगल हर आउट इन माय ओपिनियन. जॉइन ए टीम ऑफ लॉयर्स पिटिशनिंग टू द फाउंडर्स टू एंड दिस प्रैक्टिस. ठीक है. सो डी, let me tell you why I omitted the D, because D is not focusing on this part to save the newcomers from the socialization ritual. नहीं, wait. अच्छा ठीक है. बट द पॉइंट, हाँ ठीक है ठीक है. Yet the point is, uh, whether a lot of lawyers will join her. I mean, D sounds good to me. थोड़ा सा सेंस तो बना रहा है कहीं ना कहीं, है ना? अ, तो आई डोंट नो, मेकिंग सम सेंस at least. A because it will keep her private. Meet one of the newcomers in secret and tell her about this practice. A is also making some sense because it hides her identity.
बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या स्केल पे वो इम्पैक्ट ला पाएगी उससे, राइट। शी वॉन्ट्स टू सेव द न्यू कमर्स, राइट। बी इज अनएथिकल, ऑर्गेनाइज ए जेनरिक वर्कशॉप फॉर द न्यू कमर्स, बी तो नहीं हो पाएगा, बी इज 100% इनकरेक्ट, बिकॉज बी से ना ही तो आप चेंज ला पा रहे हो एंड यू आर नॉट ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर आइडेंटिटी। नहीं नहीं, अनएथिकल एज इन A is not ethical. Yeah, ethical unethical. So I generally do not differentiate between that in the Z part, because if you want to achieve something, I think मतलब वो petition कर सकती है, but will founders agree to that? Because कहीं ना कहीं I think mention था कि founders are not very uh, positive about this thing to stop this thing. Founders want this thing to continue. Founders want this thing to continue. Right. So D, I think she would not be able to join a team of lawyers because she's on the probation period. So anything else? CK meeting with Ned Flanders, suggesting him to put an end to this is not making sense. Be silent this year. This is not bringing any impact. So I think it might be A or D. A or D. Right. It might be A or D. यार बी से तो कुछ भी नहीं होगा. Why you are saying B? I think only the Anukriti is saying. So I think it must be A or D only. Right? Do not spam Anukriti. अरे द ऋषि द पॉइंट इज आई एम सेइंग कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 5 मार्क्स भी आ रहे हैं, क्रैकू के अकॉर्डिंग आपके 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, डू नॉट रिलाई ऑन दिस मार्क्स, राइट? यू विल गेट समथिंग वेरी डिफरेंट इन द ऑफिशियल आंसर की. सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट, राइट? अनएथिकल यार, आई डू नॉट नो अनएथिकल एथिकल क्या रहेगा. मीट वन ऑफ द न्यू कमर्स इन सीक्रेट, अनएथिकल एज इन आई डू नॉट हैव एनी डेफिनेशन अबाउट द अनएथिकल. तो मे बी हो सकता है, तो ए या डी से हो सकता है, हो सकता है ए और डी. चलो जी, चलो जी. थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेट है, पूरा सेट ही कंफ्यूजन वाला था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय लीजा कैन बेस्ट इनेबल हर टू डिफ्यूज द सिचुएशन. सिचुएशन क्या हुई? The water cooler discussion murmur Lisa's name. Lisa is pleased that someone shares her perspective on the socialization ritual and has acted. However, she did not write the aforementioned email as her name continues to be mentioned. She feels overwhelmed and wonders if she needs to do something about it. एक anonymous email आया and this and that. Everyone now knows about this in the organization and everyone suspects the Lisa. Which of the following actions by Lisa can best enable her to diffuse? Now you have to diffuse the situation. Focus on word diffuse. You have to diffuse the situation, right? A or B? A or B? A lot of people are saying A, a lot of people are saying B. Let's see. A and B दोनों को पढ़ता हूं मैं, है ना? Again, I will provide my reasoning. Any answer can be correct. C can be correct, D can be correct, E can be correct. क्या बोल रहा है? She should send a public email clarifying that while she has reservations about the practice, she is not the author of the anonymous mail. ठीक है. B is she should meet the founders and share that while she has reservations about the practice, she did not send the anonymous email. अब देखो, बोथ द ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर. यहाँ पे वो इम्पैक्ट, यहाँ पे जो उसकी रीच है वो 100% है, और यहाँ पे जो उसकी रीच है दैट इज लिमिटेड टू 1-2 पीपल, राइट? सो यहाँ पे यू टेल मी, शैल शी इन्फॉर्म अबाउट दिस टू एवरीवन? बिकॉज काफी लोग इसमें बात कर रहे हैं, फाउंडर्स तो शायद बात ही नहीं कर रहे. इट इज वाटर कूलर डिस्कशन, इट इज वाटर कूलर डिस्कशन, राइट? इट इज वाटर कूलर डिस्कशन. सो यहाँ पे फाउंडर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, राइट? So everyone already knows about the situation. So I think everyone should be clarified about that. है ना? Everyone should be clarified about that. That's why I would prefer A more than B. Some people are saying C. So only the founders are furious. Is it mentioned somewhere? Though no newcomer paid heed to the mail, the founders are furious. Okay, okay. But the I understand the question. I understand the question. But the part is that the water cooler discussions might involve a lot of other people, right? I think it is mentioned कि जो newcomers हैं, they did not pay attention to that,
right? And founders are furious, right? But that does not mean that we have to just cater to the founders only, right? हाँ, तो शी wants to come in the limelight, right? Because वो मेल करेगी, वो बताएगी ये मैंने नहीं किया, right? Let's see the E part also. She should simply focus on work and hope that the founders will. नहीं नहीं, she's E is not making any sense, यार. You should, you have to take some responsibility. You can't do nothing. Privacy concern, privacy concern as in, see the point is कि हाँ, let me explain in a better way. वो फाउंडर्स को जाके बताती है अपना कंसर्न, फाउंडर्स उससे अग्री करते हैं, फाउंडर्स आर हैप्पी. बट क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो वाटर कूलर रिमर्स है, वाटर कूलर्स मरमर है, क्या वो स्टॉप हो पाएगी? इफ ओनली एंड ओनली द फाउंडर्स नो अबाउट दिस, क्या जो वाटर कूलर्स मरमर है वो स्टॉप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से, राइट? ठीक है. B, because yes, I also thought it that she should not go public. She should not accept it publicly. But then I could not find some strong reason for this कि publicly उसको क्यों नहीं accept करना चाहिए या क्यों नहीं आवाज उठानी चाहिए, right? As an employee, I cannot go ahead and CC everyone and clarify my point because of some rumor. I think you should, yeah. Why you should not? Or maybe you should target the people who are more related to that. यार हो सकता है, हो सकता है. I got your point. The water cooler discussion is in her her favor. नहीं नहीं, water cooler discussion is not in her favor. The water cooler is actually, the cause is in favor. हाँ, maybe in office setting you don't respond to this water cooler discussions to in the public mail. I understand that. ठीक है. Then तो B is also making sense. Then तो B is also making sense, right? Let's wait for the right answers to come. Let's wait for the right answers to come, right? Let's wait for the right answers to come. So, ठीक है, ठीक है, okay. Let's move to this question. क्या बोल रहा है? Which of the following actions should the founders best take if they still want to welcome their newcomers by exposing them to the harsh reality of the profession while being empathetic to the demands of the times? What did you mark for this? They want to continue the same thing, but they want to be empathetic also. What should they do? E. A lot of people are saying E. A and E, right? A and E. Let's read. They should invite suggestions from their young lawyers regarding formulating a new socialization ritual. Yeah, I think it is also mentioned, right? They want to expose them to the harsh reality and they also want to be empathetic to them. अब देखो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा लोगों को, राइट? इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, राइट? At some questions you might agree to me, at some question you might disagree with me. ई में क्या बोल रहा है? They should stick to what they are doing, but hire a mental health professional who the newcomers can refer to if they feel the need. ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप कंटिन्यू भी कर रहे हो जो आप कर रहे, तो आपका वो मोटिव भी फुलफिल हो रहा है. और अगर किसी को नीड है, सो ही और शी कैन ऑल्सो कंसल्ट विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. So it is making sense to me. So I went with the E during the exam. So we don't need to take care about the cost part, राइट? हाँ, तो न्यू रिचुअल उसको नहीं करना ना. उनको न्यू रिचुअल नहीं करना, उनको हार्श रियलिटी को शो करना है. सो दे कांट गो फॉर द न्यू इनिशिएटिव, राइट? है ना? पुराना रिचुअल कंटिन्यू करना है कहीं ना कहीं उनको.
राइट अगेन यार काफी कंफ्यूजिंग सेट था ये. आई थिंक दिस वाज द सेट वेयर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस we did, but still we couldn't reach to the that correct answer, right? तो पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे तो. हाँ तो कोस्ट, अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कोस्ट भी लगेगा तो नोवेयर इट वाज मेंशन्ड कि हम कोस्ट नहीं लगा सकते, राइट? वी कैन बियर द कोस्ट. ठीक है, आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट इफ देयर इज एनी. ओके. हाँ ये सेट में भी यार थोड़ा सा, मतलब ये सेट में क्या था, ग्रोसरी स्टोर वाले में, गेट कीप गेट कीपिंग सोसाइटी में. आई थिंक इस सेट में भी आपको लगेगा कि ये भी आंसर हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है. आई थिंक सेम कंफ्यूजन इस सेट में भी था. तो प्लीज गो टू द सुंदरम सेट एंड वी विल क्विकली डिस्कस दिस सेट बिकॉज अगेन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इस सेट में भी आई थिंक इट विल बी देयर फॉर श्योर. अब यहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड पे फोकस करो. सस्टेनेबल वे टू इंक्रीज द सुंदरम्स प्रॉफिट. ऑल्सो गाइज फोकस ऑन द लॉजिक पार्ट, राइट? डू नॉट पुश योर आंसर्स ओनली, right? Just tell me, what did you mark here? A, C, C, A, D, D. So A, C, and D. A lot of people are saying D also. Most sustainable way to increase the Sundaram's profit. Sustainable way, right? It should be sustainable. It should not be the short-term part. He should offer to procure items unavailable at his shop from the town on the residents' demand. Question क्या था? Sundaram realized that he was barely breaking your. देखो, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी रेंटल में, राइट? द प्रॉब्लम वाज ऑन द रेंटल पार्ट, राइट? डू यू अग्री? ही शुड रिमूव ऑल द डिस्काउंट ही वाज ऑफरिंग एंड सेल एट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस. क्या ये सस्टेनेबल होगा? क्या तुम डिस्काउंट सारे रिमूव कर दोगे? विल इट बी सस्टेनेबल? ही enthusiastically committed to offering a 15% discount. The problem was rental part. The problem was rental part. So I think we should discuss with the association कि I am facing this problem and I might face this problem for the long term. Please इसका कुछ करो. Please discount the rent. Please provide a discount on the rent so that I can survive in your society. Right? Understand? I understand यार there was a bid. But the point is अब कोई sustain नहीं कर पा रहा. So you have to think from your perspective. You don't need to focus on the final conclusion. Think from your perspective कि क्या आंसर हो सकता है. You have to make your decision, right? हाँ कॉन्ट्रैक्ट में था. डू यू नो व्हाट हैपेंस? जो गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करती है, इट कीप्स ऑन गेटिंग रिवाइज्ड बिकॉज ऑफ द न्यू कंडीशंस. Why not A? He should offer to procure items unavailable as show from the town on residents. I think A is not focusing on the rental part यार. That's the problem. अरे हो जाता है बाबा, रिड्यूस हो जाता है. वी आर नॉट सेइंग कि उसको रिड्यूस होना ही पड़ेगा. वी आर सेइंग द बेस्ट डिसीजन दैट दे कैन मेक, द बेस्ट डिसीजन दैट सुंदराम कैन मेक. इफ यू हैड बीन इन द सिचुएशन ऑफ सुंदराम, आप क्या करते? आप नेगोशिएट करने का ट्राई करते. नेगोशिएशन वर्क्स. कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाता है. आई एम अगेन नॉट सेइंग कि ये करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा, राइट? आंसर कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो. आंसर कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो, राइट? ए कुछ सस्टेनेबल नहीं है. ए सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज यू आर एज्यूमिंग कि उसका सेल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ही विल मेक प्रॉफिट एंड ऑल दैट स्टफ. That is the thing. But again, A might be the correct, B can be the correct, C can be the correct, D can be the correct, E can be the correct. We have to wait for 3-4 days to get the official answer, right? Let's move to the next question because ये set में काफी confusion होने वाला है. I already know that. Uh, let's discuss this. Which of the following options will best address the concerns of the resident association arising out of the Sundaram getting into selling vegetables? ये question बहुत ज्यादा confusing था, at least to me.
So I will not provide any explanation for this because this was the question where I had a lot of thoughts कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज इसमें आई थिंक दो गोल्स फुलफिल करने थे, फ्री वेजिटेबल वाला और एक और रेंट वाला। तो दो गोल्स थे इस क्वेश्चन में। ए, a lot of people are saying A। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार प्लीज? बी। A lot of students are saying A or B, right? And C also। A, B, C काफी लोग बोल रहे हैं। The Residents Association should ask Sundaram to use the erstwhile space for selling vegetables and pay rent on the same. The Residents Association should discount the rent for the vegetable vendor to increase competition. The Resident Association, up to you people, how you interpret this thing. Those who have marked A, can you tell me the reasoning of A? Can you tell me the reasoning of B? Can you tell me the reasoning of C? I think a lot of people are confused in this. So let's leave this here, right? Let's leave this thing here. What about this question? What should Sundaram best do to ensure that his revenues do not come down due to rush? Due to Rushem. What is this? Rush. Okay, this is some new startup, right? Like Blinkit. Rush them. A, definitely A। यहाँ पे तो सबने A किया होगा, right? Again, I am saying यहाँ पे everyone marked A, but the correct answer can be anything apart from A also, right? This is the beauty or this is the weirdness of the Z। तुम करते कुछ हो, आंसर कुछ आ सकता है। And this I will show you in the official key when it is released। There will be a lot of questions जहाँ पे आप बोलोगे सर ये कैसे आंसर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। But this is how the things work for this, right? So this is all about the DM part। This is all about the DM part। एक बार आपको let me give you quick overview of the all the answers for the this thing starting from the quants। Shall we start? Shall we start from the quants part? क्वांट्स में तो आई थिंक सभी ने आंसर अपने देख लिए होंगे, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, राइट? क्वांट्स में तो आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी इशू होगा, राइट? एक दो क्वेश्चन का जो आंसर हमें नहीं पता लग रहा था उसका देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, लेट्स क्विकली डू ए रन। So 42.6 is the correct answer। 42.6%। ओके, सभी कैलकुलेट करना। लेट्स डू फॉर द क्वांट्स, राइट? कैलकुलेट योर स्कोर फॉर द क्वांट्स। 42.6, y is equal to 6 is the correct answer। 1,20,000 is the correct answer। Then 77,500 is the correct answer। Pi by 4 is the correct answer। 250 meters is the correct answer। 250 meters should be the correct answer। Then the distance between y-intercept of the two lines is 6 is the correct answer। 4,73,000 is the correct answer। 4 is the correct answer। Then 7 minus root 3 feet is the correct answer। A minus B and C are divisible by 3 is the correct answer।
This is a controversial question, so we do not know what Z will give as a correct answer for this. It may be 2 or maybe E also, but I think it should be 2. But let's see what the Z authorities give answer for that question. 13, 7 by 15 is the correct answer. Third lowest rating is 37 is the correct answer. 1 and 2 together only is the correct answer. Uh, 13 is the correct answer. I is the correct answer. Then in this question, I think B and C both are correct answer. We need to check that. Uh, then the unscaled gender gaps reduced in all 10 cities is the correct answer. Sumana scored 2 marks in the first test is the correct answer. Right. 0 is the correct answer. Then 9 is the correct answer in this question. Then 4 is the correct answer in this question. Then 2 is the correct answer in this question. And then 3 is the correct answer in this question. Then 7 hours 28 minutes is the correct answer. Then approximately 6.67 kilometers south of the old town is the correct answer. Then 120 kilometer per hour is the correct answer. And this marks the end of the quants. So how many of you are scoring 10 plus in the quants? Or what marks you guys are scoring in the quants? Quickly. Also, guys, please like the session. Please like the session. It would be great help. And I wish you get very, very good score in the VARC in the DM part. Irrespective of what you are getting here, it does not matter. It does not matter, right? DM का भी एक बार go through कर ले. Can we go to the DM also? DM में it was sort of just discussion only, but still I can show you कि हमने क्या to which answers we zeroed down for the particular type of questions, right? Great score Kushagar, Vedang, Himanshu, great score Sakshi. चलो and ठीक है, fine. Please like the video. Let's target 170 likes and then let's review the DM section. Let's review the DM section. Please like the video. 170 likes. Let's do the review of the DM section at 170. One more thing I want to address for the VARC part. Do not rely on any source, especially do not rely on the Kraku. Why I'm addressing it? Because I think a lot of students are using the Kraku. Do not rely on the Kraku or any other source for the VARC and the DM. For the VARC and the DM, do not rely on anything. Wait for 2 days, wait for 3 days, and you will be all clear about your marks. Right? Guys, 170 likes and we start. Quickly like the video. चलो. Cool. तो देखो यहाँ पे we agreed that this Sukanta needs more time to learn about the dynamics of the eastern market should be the correct answer. Here in Tivana, the competing media agencies keep defaming each other out of fierce competition should be the correct answer. Then he should wait and watch as the investment in Sukanta may need more time to bear the result is the correct answer. Then either BCD might be the correct answer or BCE can be the correct answer, right? But you gave me some good reasoning about this, so I think that A might be the correct answer for this question, right? Coming on to this part, shut down the cafeteria until further notice because it is very easy and it is not required at the moment, so you can shut down the cafeteria, right? Coming on to this, a lot of students, what we went with. So D might be the correct because this incurs a lot of cost, but this guarantees the to finish the work in the 3 days.
right? Apart from this, I think AC does not make any sense. But a lot of you have also attempted or went for the B part, right? So B may be the correct option also, right? Uh, Now coming on to this, those who complete this online management certificate program do well in their career. This might be the correct answer. Or a lot of students also attempted that Arya feels that online program is light enough to manage while working full time. I think one among these options would be the correct answer, right? Arya has a better choice of furthering her career in a field of her interest through the executive MBA program. I think this should make sense. Again, in this question, I think a lot of students are confused between C and D because D compares yourself with another B school in the past, whereas in the C, ownership is reflected. So maybe C or D, right? Uh, then coming on to this, Dhira should mandate that the senior trainers must allow the young trainers to take at least 30%. Why E seems wrong? Because E is about the 100% ownership or 100% responsibility to the young trainers, whereas in the C, there is a 30% responsibility. So less scope of mistake. Here she should share with Dheeraj that assigning her client complaints to novice trainers will lead to the loss of the client. CEO के पास जाने का इसमें कोई sense नहीं था. That's why we agree with the D part. Right, यहाँ पे engage in a follow-up conversation with the client requesting that they can communicate their concerns. I think this is one of the confusing questions जहाँ पे people have different thoughts about B, C, and E, right? So obviously a confusing question. Then Ramya should publish the article given the time sensitive nature of the report. Maybe you can go with the D also, or maybe B might be the correct answer. That is, Ramya should publish the article because any investigation by Aditya Swaroop has the reputation and this and that. यहाँ पे publish a modified version or maybe publish a follow up article. राइट, रिट्रैक्ट का तो आई डोंट थिंक इट वुड बी द करेक्ट पार्ट, बट जेड का अगेन वही बात है कि जेड कुछ भी दे देता है आंसर्स में. सो वी कैन नेवर से विद द श्योरिटी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, राइट? देन tell Aditya Swaroop that he plans to delegate the mining company project to a fresh company. But I think a lot of you have also said that कि यहाँ पे E भी हो सकता है, right? A lot of you also said कि anonymous जाके he will get some confidence this and that, तो maybe, and a lot of you also said कि C भी हो सकता है. तो again a lot of confusion in this question. And A and D में देखते हैं, meet one of the newcomers in the secret and tell her about this practice, join a team of lawyers. I think why D might not be the correct answer because a lot of lawyers might not be interested. And but a lot of you also say that A might be the unethical part because she is telling something to someone in the secret. But I don't think that would be on the part of ethics or unethic. But let's see. Then uh, she should send a public email. I think a lot of you mentioned were correct about your reasoning ki generally kuch hota hai to we don't put public email in the offices, so in the corporate world. So I think A might not be the case, but then B makes sense that she should meet the founders and share the story with them, right? Then I think here E makes sense because it is continuing their operation and it is also focusing on the empathy part, right? But one of the students was concerned about the cost part, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें cost का कोई role है, so I think you can ignore that part. Then this set was full of confusions and full of uh, doubtful choices. So यहाँ पे बहुत सारे answers possible थे, so I don't want to comment here. Then again, a lot of ABC seems possible, so we have to wait for the final key for that. Then Sundaram, I think everyone agrees with this, right? Everyone agree to this that Sundaram should employ a few helpers who will do home delivery of his product. But again, this does not represent कि यही correct होगा या यही wrong होगा, right? Yeah, I don't know how to review the VALR because literally I do not have any idea why I marked the options that I marked. So I might be very, very, very wrong here, right? So there is no point in discussing the VALR part, and there is no point in discussing the cutoffs also, right? Because we do not know the exact answers, we do not know how you guys performed. So just based on the Kraku part, I can't comment on the cutoffs, right? And it would be very, I would say, useless activity to comment on the cutoffs at this point of time when we do not know anything about this thing, right? Just want to make announcement for the people who are here so far. So if any one of you are appearing for the
CAT 25 part. So CAT 25, we are launching our courses in February, and the courses will be full time for Quants plus LRDI. This will be the QA plus LRDI 99 complete course, right? And the fee will be very economical, very affordable. Why I am not starting for the VARC? Because I believe that in the VARC there are very few teachers who can make you understand the reasoning from your perspective also, right? I feel that Zizo is one of the teachers, right, who can do the job much better than other teachers. So maybe you can refer to the Zizo 1000 for that. But apart from that, for the QA plus LRDI 99, you can completely rely on me. It would be full 9 months course, right? And the course will be complete live, right? So, so we will not be commenting about the VALR and the cutoff for the DM, because VALR का कुछ पता नहीं है यार, DM का भी नहीं पता, राइट? हम थोड़ा क्वांट्स के बारे में देख सकते हैं. क्वांट्स का देखो, काफी लोग मेरे से अग्री नहीं कर रहे थे कि लेवल थोड़ा सा डुएबल आया है, बट आई वुड से कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी लोगों ने अटेम्प्ट तो ज्यादा ही किया है इन द क्वांट्स पार्ट, राइट? इन द क्वांट्स पार्ट काफी लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया है मेरे अकॉर्डिंग, राइट? आई डोंट नो हाउ यू थिंक, बट क्वांट्स में आई रियली फील कि लोगों ने अटेम्प्ट किया है भर भर के, और डुएबल चीजें भी थी क्वांट्स में. डीआई में भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, एंड दिस यूज नॉट टू बी द केस इन द पेपर व्हेन द लेवल इज हाई. सो क्वांट्स में आई कैन से दैट मे बी 8.5 से 9.5 कट ऑफ हो सकती है, और ऑन द लोअर साइड मे बी 8 to 9.5 could be the cutoff, uh, right? This I am saying, with respect to the uh, engineer female, और लेट्स से नॉन इंजीनियर मेल. और अगर आप नॉन इंजीनियर फीमेल हो तो माइट बी लोअर, राइट? थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा कट ऑफ में, बट आई थिंक 8 9.5, 8 to 9.5 के बीच में कट ऑफ हो सकती है, राइट? दोज हु आर गेटिंग जस्ट 3 4 marks इन द क्वांट्स, राइट? आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स होप्स, राइट? सो बट रियलिटी में आई वुड से कि इतने मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाली है ना. दिस इज 100% श्योर, है ना. यहाँ पे मे बी डेविएशन आ सकता है, मे बी दिस फिगर माइट बी 7, बट 7 भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी. बट ये चीज तो नहीं होगी, 3 to 5 के बीच में, अप टू 5 कट ऑफ क्लियर नहीं होगी क्वांट्स की. दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन से, राइट? एंड इफ यू आर गेटिंग below 5 marks in the quant, so I don't think you should have some hopes from this section to clear the cutoff, right? For the VALR and the DM, I think it is highly dependent on the overall performance of the pool of the candidates, right? So हमें वो देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, राइट? हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या स्कोर आया लोगों का. आई थिंक वो एक बार ऑफिशियल की आ जाएगी, उसके बाद वी कैन वर्क ऑन द डेटा ऑफ द क्रैकू. नहीं तो क्रैकू खुद बता देगा, है ना? ठीक है. So let's end the class, right? I think it was great 2 hours with you. I enjoyed a lot, and I hope you must have also enjoyed the part, right? So let's end the session. Any final thoughts? No, I have repeatedly say that you don't need to rely on the Kraku for VA or the DM. It does not mean anything. Your number can increase by 5 6 marks, and it can also be decreased by 5 6 marks. I don't know how many times I have to repeat this. Harsh yaar, shall I try that question kya? Average wala, because I think that was on the easier side. I am pretty confident about the 37 answer. I am confident about the 37 answer. कहाँ पे है क्वेश्चन, कहाँ था वो? Let me figure out the question. Then after that we can end the class. I am pretty confident about the 37. मुझे नहीं लग रहा 37 के अलावा कुछ उसका आंसर होगा. ये वाला ना. uh, let me see. 8 employees. So let's say मैं ascending order में arrange कर रहा हूँ. Lowest, second lowest, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So 8 positions.
On a scale of 1 to 50, all the ratings are integers. The overall average rating of the 8 employees is 30. So that means इसका total 240 है. While the 5 employees with the highest rating average 38. तो highest 5, 1 2 3 4 5. तो यहाँ तक का total कितना हो जाएगा? 38 into 5, that is 190. और ये टोटल कितना हो जाएगा? इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 190 एंड दिस मस्ट बी 50. तो 190 प्लस 50 240. द 5 एम्प्लॉयज विद द लोएस्ट रेटिंग एवरेज 25. तो 25 पांचा 125, मतलब लोएस्ट 5 का कितना रेटिंग हो जाएगा? दिस इज 125, दिस इज 125. सो इन दोनों का टोटल कितना होगा? व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस एंड दिस वैल्यू? दिस इज 125 minus 50, that is 75, right? So क्या बोला है? Which of the following ratings about the obtained by the 8 employees is definitely false. The third lowest rating obtained is 37. अच्छा. The second the highest rating obtained is 40. 40 1 2 3 4 200. यार यहाँ पे मेरा 70 क्यों आ रहा था एग्जाम में? That seems to be some problem. नहीं नहीं, लोएस्ट 37 मुझे अब थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, बिकॉज इफ आई पुट 37 हेयर, तो 37 यहाँ पे आएगा, दैट कैन बी सेटिस्फाइड. क्योंकि मेरा मुझे यहाँ पे एग्जाम में 70 आ रहा था कुछ यार. सो सो आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल, राइट? थर्ड लोएस्ट रेटिंग obtained is 37 seems possible to me, राइट? लेट मी शो यू द केस. लेट से यहाँ पे 37 आ गया. ये नहीं, 37 तो पॉसिबल है ना. हमें क्या फाइंड करना है? डेफिनेटली फॉल्स. हाँ, तो ये पॉसिबल है, तो ये तो ट्रू हो सकता है ना, है ना? सो दिस कैन बी ट्रू, सो दिस कैन बी द आंसर, राइट? ये तो ट्रू हो सकता है. यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो, यहाँ पे आप कोई वैल्यू भी रख दो. लेट से यहाँ पे 10 और 3 रख दिया, और यहाँ पे लेट से 37 एंड 38 रख दिया. देन दीज वैल्यूज कैन बी एडजस्टेड. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 75 आ गया, तो इन तीनों वैल्यूज का सम क्या आएगा? इनका सम आएगा मेरा 115. तो 115 तो किसी भी ऑर्डर में इसमें आ सकते हैं, तो नॉट ए प्रॉब्लम. नहीं, 111 आ सकता है क्या? 38 इंटू 3 क्या होता है? हाँ, आ सकता है. 38 38 39 एडजस्ट हो सकता है. सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. नहीं नहीं, दिस विल नॉट बी द आंसर. 37 इज पॉसिबल. 37 इज पॉसिबल, तो दिस विल नॉट बी द आंसर. माय बैड. देखो ना, 37 तो पॉसिबल है. 37 37 38, राइट? और यहाँ पे आप क्या रखोगे? 38 38 39. तो 37 इज पॉसिबल. सो आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज देयर, राइट? 37 इज पॉसिबल. सो 37 विल नॉट बी द आंसर. बाकी कौन सा बोल रहे हो आप? 40 वाला? लेट मी चेक दिस पार्ट कि ये पॉसिबल है या नहीं. द हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 40. सो आई नीड टू मेक श्योर कि ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग 40 मैंने कर दिया. सो मुझे इन तीनों का क्या लेके आना है? 115 ना. सो इन दोनों का आई हैव टू मेक. हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल. नहीं, 115 माइनस 40 कितना होगा? 75. हाँ, so this and this should be 75. So this can be 40 and 35. So but ये हो जाएगा मुझे लग रहा है. आई थिंक दिस विल नॉट बी द आंसर. तो आई थिंक सी मस्ट बी द आंसर. इन सी इज द आंसर. हाँ, वन इज पॉसिबल, राइट? वन इज पॉसिबल. सो हमें बोलना डेफिनेटली फॉल्स. जो डेफिनेटली फॉल्स होगा, तो वन तो आंसर नहीं आएगा ना, इफ वन इज पॉसिबल.
अरे गलत क्यों है भाई? मैंने अभी दिखाया तो आपको 37। शोड यू ना 37। कैसे आ रहा है? अब वो सारा मिट गया है। लेट मी शो यू अगेन। 37 तो पॉसिबल है ना? देखो ये आंसर कब होगा जब 37 पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड लोएस्ट रेटिंग को मैंने 37 लिया, यहाँ पे मैंने 10 लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिया, ठीक है? ये मेरा 50 बन गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 37 लिया, यहाँ पे 38 लिया। ओके, दिस इज 75, राइट? अब यहाँ पे मुझे कैसे ना कैसे कुछ भी बनाना है, तो आई कैन डू 38, 38, 39। डन। क्या दिक्कत है बताओ? कैसे नहीं पॉसिबल? फाइनली सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, मैंने एज्यूम नहीं करा, मैंने एज्यूम नहीं करा। 38, 38, 39 लास्ट में फिट हो रहा है। नहीं, कोई कॉल नहीं आएगी 1.75 इन क्वांट्स पे, राइट? आई डोंट नो व्हाई a lot of people got confused here. I also got some type of confusion. Maybe it was first option, that's why maybe. अरे चैट जीपीटी को क्या बताया भाई? चैट जीपीटी लास्ट मस्ट एवरेज 25। तो 25 एवरेज नहीं हो रहा क्या? 50 प्लस 70। 37 लोएस्ट रेटिंग obtained इज 37। सही तो है। थर्ड लोएस्ट 37 डाला तो हुआ है। व्हाट इज द कंफ्यूजन? अरे यार हर्ष, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड। C is the correct answer. C is the correct answer. A is incorrect, B is incorrect, D is incorrect, E is incorrect. C is the correct answer. The lowest obtained rating is 1। 1 तो हो ही सकता है ना, यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 12 कर लो। नहीं, 40 इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट स्कोर रेटिंग इज 40 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।